बेसिक से सिंपल से दो कॉन्सेप्ट्स टच करेंगे, राइट। सो पहला मैं टच करती हूँ, दो टॉपिक्स हैं और उनको हम, दे डोंट रियली नीड टू बी डन इन डिटेल क्योंकि इनकी कोई प्रैक्टिकली हम लोग क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन दे आर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ये डायग्राम आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, चॉम्स्की हायरार्की। और अब आपको याद आ रहा हो तो जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों के लिए एक बबल बनाया करती थी। फिर जब हम लोग नेक्स्ट उसमें गए तो आई स्टार्टेड मेकिंग अनदर बबल इनसाइड द बबल, राइट। और हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और उसमें पैलिंड्रोम्स आ गए और उसमें ए एन बी एन आ गया, राइट। और रेगुलर में हमारी वही आ गई, कंटेनिंग द स्ट्रिंग्स, नॉट कंटेनिंग द स्ट्रिंग्स, इवन लेंथ, ऑड नंबर ऑफ बीज, इवन नंबर ऑफ एस, इस तरह से इवन ऑड वगैरह। फिर उसके बाद कुछ मैंने बनाने छोड़ ही दिए। उसके बाद आई जस्ट पुट देम ऑल इनटू वन। ये जो तीन बाहर के हैं मैंने इन सबको ट्यूरिंग मशीन की कैटेगरी में डाल दिया, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम इनके लिए डिफरेंट मशीन्स बनाएंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे हम इसमें। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव की आप देख सकते हैं पावर एज कंपेयर टू डिसाइडेबल एंड ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल, इसकी पावर कम है, राइट। डिसाइडेबल की पावर ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल से कम है, और ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल हमारे पास हाईएस्ट पावर की मतलब सेट ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास आती है हायरार्की में। ओके, हैविंग सेड दिस, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, डिसाइडेबल एंड ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बनेगी ट्यूरिंग मशीन ही, राइट। डिफरेंस क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में हमारी ट्यूरिंग मशीन है दैट इज गोइंग टू बी फाइनाइट ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है। इसको कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन की मॉडिफाइड वर्जन को कहते हैं लीनियरली बाउंड ऑटोमेटॉन, ठीक है। लीनियरली बाउंड यानी कि लीनियर तरीके से इट इज बाउंड, ये ट्यूरिंग मशीन हम यूज करते हैं। बाय हैविंग फिक्स्ड मेमोरी लेंथ, जिस तरह के हम लोग काम करते हैं, हमारी पावर भी इससे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, राइट। इसको दैट्स वाई हम इसको एक इनर सर्कल में लेके आते हैं। डिसाइडेबल हमारे पास वो सेट ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि दे ऑलवेज डिसाइड, यानी कि दे ऑलवेज हॉल्ट, दे एक्सेप्ट एंड दे रिजेक्ट, राइट। और ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल हमारे पास सबसे ब्रॉड कैटेगरी में आती है, वेयर यू मे एक्सेप्ट, यू मे रिजेक्ट और यू मे लूप फॉर एवर, राइट। सो ये इन तीनों की डिफ्रेंसिएशन है। लेकिन हम बनाते इन सब में ट्यूरिंग मशीन है, इसमें हम ट्यूरिंग मशीन को कहते हैं लीनियरली बाउंड, और इसमें मेमोरी जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसका एक टेबल भी बना होगा, यस दिस इज द टेबल, राइट। तो हम लोग क्या देखते रहे, वी स्टार्टेड ऑफ विद टाइप 3 लैंग्वेजेस। टाइप 3 जो थी हमारे पास ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेस कहा था, रेगुलर ग्रामर कहा था, और हमने कहा था फाइनाइट ऑटोमेटॉन इज ओके फॉर इट। टाइप 2 जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, बड़ी डिटेल में हमने जो सेकंड पार्ट हमारे कोर्स का था किया, और हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस उनको नाम दिया, एंड द मशीन दैट वी यूज्ड फॉर इट वाज नोन एज पुश डाउन ऑटोमेटॉन। अच्छा, टाइप 1 और टाइप 0, these two are somewhat compressed into our part 3, right, which is solving using Turing machines, ठीक है। सॉल्व करते वक्त हम डिफरेंस नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ इस टॉपिक के हम फोकस में हम ये बात करेंगे कि टाइप 1 इज दैट जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, और वो ट्यूरिंग मशीन की वो फॉर्म है जो कि दैट इज बाउंड, दैट हैज लिमिटेड मेमोरी, जैसे कि हमारी रैम लिमिटेड होती है। Then we have type 0, which is known as unrestricted grammar. It comes in recursively enumerable and recursible, right? Recursive is the one that always stops, means it accepts and rejects. And recursively enumerable is the one that may loop forever, that may accept, that may reject, or that may loop forever. Okay? So इस पूरी में अगर मैं start पे जाऊं, so these are the grammars that we've talked about, okay? 3 को बहुत डिटेल में किया, 2 को बहुत डिटेल में किया, और 0 1 को हम हमेशा मिक्स करके करते रहे। Okay, so this is how your linearly bound automaton will look like, right? So आपकी जो मेमोरी है that will not be infinite from any of the sides, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि हमारी जो ग्रामर है, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी कह सकते हैं या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी कह सकते हैं,
So उसमें क्या है कि you can see some letters on this side as well, left side. Multiple letters नजर आ रहे हैं. It means कि अब ये context is also important. What is on your left and right is also important. So it comes in the context sensitive या unrestricted grammar में आ जाता है, right? मैं for the time being इनमें differentiate नहीं करूंगी. I will not differentiate between both of them for the time being. So क्योंकि हम इनको for the time being एक ही category में इनको डाल रहे हैं, right? So maybe just for the record, you can have a look at these grammars, जो कि different होंगी from what we have been seeing before, right? And that is about it, right? So just to give you an idea that this large bubble that we are looking at is actually composed of 3 parts, and they are not the same. लेकिन हम जो बताते हैं machines, वो हम तीनों को differentiate किए बगैर ही हम इनकी machines को draw करते हैं, right? So with that, I will move on to the topic. Okay, that is also not a very difficult topic. Just कहते हैं understanding के लिए हम लोग वो वाला भी हम लोग करते हैं topic. The topic is variations of Turing machine, right? So Turing machine, no matter what shape it takes, the power of Turing machine remains the same, right? You can see that Turing machine can be used in a variety of cases. For example, you can have a Turing machine that may not move to the right or left at every step. It may just stay there where it is. And you may have a Turing machine that is semi-infinite tape, जैसे हम लोग करते रहे, that has just one side which is infinite. Then offline tape, multi-tape, multi-dimensional, non-deterministic. So they are self-explanatory. We'll just look at a couple of them just to broaden our horizons about no matter what shape or what variant it is, the power of the Turing machine will remain the same. हम एक ये काम जरूर करेंगे, जिस ऑप्शन को देखेंगे we will try to simulate it onto the regular Turing machine, and we'll simulate the regular Turing machine onto this special or the variant of the Turing machine. Okay. एक example करते हैं that is going to be making things easier and simpler for you to understand. Okay. थोड़ा सा मैंने कुछ skip किए हैं slides. I will go back to them. For now, what you see in front of you is a Turing machine, right? That is known as a Turing machine with a stay option. Stay option means that it can move to the left, it can move to the right, and it also has an additional option of staying where it is. So you may give it the option A, S. So it doesn't move to the left or to the right. जैसे कि ये देखें आप. So you Q1 पे आप हैं, you read an A, you write a B, and you stay at where you are. So that's one addition that you can do. Using this variation does not enhance or lessen the power of the Turing machine, right? Can anybody tell me कि आप regular Turing machine को how can you convert it into a Turing machine with stay option? Yes, anybody? How can you make a regular Turing machine act as a Turing machine with stay option that also has the added functionality of staying at the same point? Ma'am, first change the letter at the current position, then move right until it encounters a null, and without replacing anything, when it encounters a null, it goes back until it arrives at the head position. नहीं, one step आप move कर सकते हैं ना. आप ऐसा करें ना, one step to the right जाएं, one step to the left जाएं, तो आप वापस आ गए. नहीं? Yes, ma'am. So this is a very simple way. आप अगर इसमें देखें, so
एक मशीन है, it's a that says stay option वाली, वो कह रही है whenever if you find an A at that location, replace it by B and stay over there. So if you want to make your regular machine work like a stay option, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, you move one step to the right, और जो भी था राइट पे उसको उससे रिप्लेस करके, सॉरी लेफ्ट पे मूव कर जाए, जो भी था उसको फिर आप वन स्टेप टू द राइट मूव कर जाए. देखिए ऐसे होगा यहाँ पर. So if you see, let's say this is your tape, right? Standard machine है आपकी, and you want to do uh, read A, write B, and stay where you are. So regular machine में you will not be having the option of staying. However, you can simulate it. What you will do is you will read A, you will overwrite it with B, and you move one step to the left. नेक्स्ट वो ये कहता है कि जो भी लेफ्ट पे था उसको उसी से रिप्लेस करके वन कम बैक टू, सो एक स्टेप आगे जाए और एक स्टेप पीछे आ जाए, सो दे यू डोंट चेंज योर पोजीशन, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन use your regular machine to act as a Turing machine with a stay option. अच्छा, हम लोगों ने देखा हो तो जो पैराडाइम ऑफ एक्टिंग है वो यही तो है. You are somebody else, but you act, you behave like you are somebody else, right? So इसी तरह से you originally you are the original Turing machine, but you can modify your behavior such that you look like you're a Turing machine that also has a stay option. I hope that's clear. Similarly, if you want your stay options Turing machine to act as a regular Turing machine, what you will do is, anybody can give me a clue? Yes, how can you make a stay option Turing machine behave like a regular Turing machine? Man, doesn't it already have the functionality of the regular machine? Yes, you don't use the stay option, right? So this is a trivial solution, right? So you have added functionality, you don't use added functionality, just behave like a normal Turing machine. Okay, another machine that you can look at is a multiple track Turing machine. It is that Turing machine that can have multiple tracks. So it has one tape head, and when it reads two things at a time, right? You can have more than two tracks. For example, just imagine if you had three tracks, life would be so simpler. If you had to add two numbers, you'll just put them on top of each other, and then you can just simply add like we regularly do, right? So if having these tracks does not really enhance the capacity or lessen the capacity of the regular of the Turing machine, but it just gives us convenience. So if you were using the regular Turing machine, you'll have to do a lot of running and keeping track of the markers and separators. But having tracks in parallel greatly reduces your time and effort that you will be needing to solve a particular problem. Okay. So in case of matrix multiplication, yeah, in case of addition, in case of multiplication, these things come in very handy. चलता कैसे है, वो ये कहते हैं कि जब आप रीड करें बी और ए को, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बी है और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आपको बी नजर आ रहा है और ए नजर आ रहा है. कह रहे हैं अगर आप बी ए रीड कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं आप सी डी के साथ एंड मूव वन स्टेप टू द लेफ्ट, राइट? सो आई डोंट नो व्हाई देव, if I were to write it, I will keep this in vertical and also this part in vertical. लेकिन इन्होंने यहाँ पे vertical दिखाया, यहाँ पे horizontal दिखाया. It's just a matter of the notation. So replace A by C and replace A by D, ठीक है? C और D से आपने replace कर दिया उसको and you move one step to the left. So that's it, right? So ये बड़ा handy रहता है when it comes to adding numbers. एक example इसमें given भी है हमारे पास इसकी कि how can you add
टू डेसिमल नंबर्स, उनके कैरीज को भी मैनेज करना विदाउट एक्चुअली डूइंग द एडिशन, जस्ट बाय एम्बेडिंग द रिजल्ट्स इन द ट्यूरिंग मशीन आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये मैं आज नहीं, अगर हुआ तो मैं अगली किसी क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग द सोल्यूशन, लेकिन ये सोल्यूशन इस सोल्यूशन से इंस्पायर्ड है जो कि हमने एक बार मोर मशीन, मेले मशीन हमने बनाई थी बाइनरी नंबर को इंक्रीमेंट करने की जो थी, इससे हमने इन्फर किए, राइट। सो अगर किसी को इंटरेस्ट हो दे कैन डायरेक्टली रीच मी फॉर दिस, लेकिन मैं क्लास में ये शायद ऑनलाइन में हमें मे बी नॉट द राइट कहते ना तरीके से हम एक्सप्लेन ना कर सकें, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल ओवर हियर। अच्छा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक का बहुत बार यू हैव बीन आस्किंग कि नॉन टर्मिनिज्म कैसे चलता है। सो एक बड़ी जबरदस्त डायग्राम है दैट आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल इन आंसरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉन टर्मिनिज्म दैट वी हैव एवर एनकाउंटर्ड, राइट। सो इफ यू सी ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास पाथ्स हो, फॉर एग्जांपल ए पे यहाँ भी जा सकते हो, ए पे वहां भी जा सकते हो, तो बेसिकली व्हाट यू डू इज you go in a breadth first manner, right? So explore all the options at a given step, करते जाएं वन वन स्टेप इनके, ठीक है। और आप कहते हैं कैसे हो सकता है कि नॉन टर्मिनिज्म में वो एक्सेप्ट कर जाए, हाउ डज इट नो। सो उसमें क्या है, आप करते जाएं एंड जिस लेवल के ऊपर जाकर वो स्टॉप कर जाएगा, जैसे यहाँ पर उसने एक्सेप्ट कर लिया, सो दैट मीन्स बाकी जगहों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। सो आप इस स्टेप, जो स्टेप आए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर जा रहे होंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, तो यू विल नेवर गो इनटू स्टेप i+1, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग every type of non-terminism, whether this is PDA वाली non-terminism है, finite automata वाली non-terminism है, या फिर ट्यूरिंग मशीन वाली non-terminism है, क्योंकि non-terminism को करने का किसी के पास तरीका है ही नहीं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखें नॉन टर्मिनिस्टिक हमारे पास मशीन हो, राइट। सो नॉन टर्मिनिस्टिक मशीन क्या होगी कि इफ यू हैव ए ऑन द टेप लाइक हियर एंड हियर, you can do two things. Either you can overwrite with B and move to the left, or you can overwrite it with C and move to the right, right? So इन दोनों को करने में you don't, अब आप लोकल पे है, you don't really know in the long run which is going to be giving you the right answer. So आपको तो दोनों को साथ लेके चलना है। So आप दोनों को साथ लेके चलते जाएंगे और आप क्या यूज करेंगे, आप अपनी टेप यूज करेंगे कुछ इस तरह की, राइट। सो यू विल यूज मल्टीपल ट्रैक या मल्टी टेप यूज करेंगे और उसमें आप अपनी ऑप्शंस डालते जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी टेप पे ABC पड़ा हुआ है, दैट यू कैन सी यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। सो आप स्टेट को अपनी उसके नीचे लिख लेते हैं, और अगर, राइट, इफ यू हैव टू ऑप्शंस तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट रेप्लिकेट द कंटेंट्स ऑफ द टेप इधर और इधर, एंड यू ऑल्सो रेप्लिकेट द टेप हेड, ठीक है, उन दोनों में आप करते जाते हैं, एंड देन यू कीप देम टुगेदर, उनको मॉडिफाई करते जाते हैं। जब भी आप ब्रेथ का लेवल चेंज करते हैं तब आप इनको मॉडिफाई करते जाते हैं, दिस ऑल द ऑप्शंस, या ये ब्रांचेस बनती जाती हैं आपकी ट्री की। सो हैविंग सेड दिस, इसमें ये है कि आप जितनी मर्जी टेप की जो है मल्टीपल टेप्स या मल्टीपल ट्रैक्स आप ऐड कर सकते हैं, ताकि कन्वीनियंस हो आपको, यू डोंट रियली हैव टू गो बैक एंड फोर्थ, राइट। पैरेलल एक टेप पे रखने से बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ होगा, सो इट्स अ गुड आइडिया जगह बनाना, जैसे हमें अरे में बनानी पड़े। सो यहाँ पे हम आराम से वी कैन गो बैक एंड फोर्थ और ट्रैक करना हमें चीजों को ज्यादा आसान होगा। सो इस तरह से देखा जाए तो डिटर्मिनिस्टिक और एक बात पक्की है कि डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, नॉन टर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, दे हैव द सेम पावर, जैसे कि deterministic FAs and non-deterministic FAs, they also had the same power. However, this is not the same for PDAs. Deterministic PDAs, they have lesser powers as compared to non-deterministic PDAs, right? So this is it. हमारा बस आज का इतना ही था।